Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to practice some questions regarding mechanics, जिसमें हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन. सो बेसिकली इसमें थोड़ा सा बेसिकली ब्रीफ किया गया होगा पहले, एंड उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो वेरियस जो हमारे स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन है उनके प्रीलिम्स में, मेंस में आते हैं. ठीक है. सो दैट इससे क्या होगा, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बेसिस पे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हम कहाँ स्टैंड करें. लाइक हमें जो क्वेश्चंस किए हुए हैं, राइट, हमने जो क्वेश्चंस किए हों, हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं एक्चुअली. ओके, एज यू कैन सी देयर आर वेरियस क्वेश्चंस जो अभी तक आप देख पा रहे होंगे, जैसे यूपीपीएससी है, आईएएस है, देन वी हैव यूपीयूडीए, राइट, देन वी हैव दिस छत्तीसगढ़ पीएससी, पीसीएस, एमपीसीएस. सो वेरियस एग्जामिनेशंस का में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इससे हमें एक इंटेंसिटी समझ आती है कि क्वेश्चन में से एक टॉपिक में से क्वेश्चंस फ्रेम किस तरह हो रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब जैसे कि हमने ऑलरेडी ये टॉपिक्स कल कवर किए थे प्रीवियस लेक्चर में, नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिसिंग. ओके, पहले हम ब्रीफ भी कर लेते, कोई इशू नहीं है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज़ द area of science concerned with the behavior of physical bodies with when subjected to force or displacement and the subsequent effects of the bodies on the environment. Then second, weight is the force exerted in a body by gravity. Then we have mass represents the amount of matter in a particle or object. The mass of matter is constant at every place. It is denoted by m. Okay, then we have this difference between mass and weight. Then we have distance and displacement. In daily language, distance and displacement are used in the same sense, but in physics both have different meaning. The length of a specific path traveled between 2 points by an object is distance. Displacement is a vector whose length is the shortest distance between the initial and the final position. Okay. Speed and velocity. Speed is the distance traveled per unit time. So speed is equal to travel distance divided by time. It is a scalar quantity. Okay, and at the SI unit is meter per second. Velocity is the distance traveled by an object per unit time in a particular direction. Velocity is equal to displacement divided by time. The difference between speed and velocity is that speed has the only magnitude without a specific direction, while the velocity has both magnitude and as well as direction. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Okay, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Acceleration is the rate of change of velocity of an object with respect to time. Acceleration is equal to rate of change of velocity divided by time. Acceleration is equal to, obviously, rate of change of velocity is final velocity minus initial velocity divided by time. The initial velocity of an object is u, and after time t, its SI unit is meter per second square. Newton's law of motion. So the first law, Newton has stated 3 physical laws that together lay the foundation for classical mechanics. They describe the relationship between bodies and forces acting upon it, and the motion in response to those forces. Newton's first law of motion. Newton's first law of states that every object sorry, will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action. Inertia is a tendency of a matter by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line. The tendency of an object resists changes in the state of motion varies with mass. Mass is the quantity which is solely dependent upon the inertia of an object.
The more inertia that an object has, more mass that it has. Newton's second law of motion. The second law states that acceleration of an object depends upon two variables. Okay, acceleration जो है हमारा, that depends upon two variables. The net force acting upon it, upon the object, the mass of an object. Net force कितना apply हो रहा है and उसका mass of object क्या है. Thus the acceleration of an object subject to the force is directly proportional to the net force. Newton's second law of motion. The second law states that the acceleration of an object depends upon two variables. The net force acting upon the object, net force कितना act कर रहा है, and mass of the object क्या है. Thus acceleration of an object subject to the force is directly proportional to the net force. In the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of an object. Inversely proportional to the mass of an object. When A is acceleration, F is force, and M is mass. F is equal to M into A is equal to force is equal to mass into acceleration. Newton has an equal to 1 gram. Sorry, 1 Newton is equal to 1 kilogram per meter square. And 1 Newton of force is the force required to accelerate an object with the mass. Accelerate an object with the mass of 1 kilogram. 1 meter per second. 1 meter per second every second. Newton's third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. The force imposed by the first object to other object is known as action, while the force imposed by the second object on the first object is known as reaction. The size of the force on the first object equals to the size of the force on the second object. Newton's third law of motion is also known as action-reaction law. Action-reaction law. Then we have momentum. Momentum is the product of the mass and velocity of an object. Momentum P is equal to mass M and velocity V. Momentum किसके बराबर होता है? Momentum होता है हमारा mass कितना है into multiplied by velocity. It is a vector quantity possessing a magnitude and direction. The SI unit is kilogram meter per second. SI unit is a kilogram meter per second. Change in momentum. The rate of change of momentum of an object is proportional to the imposed force of an object. The change of momentum occurs always in the direction of the force. It is the other form of Newton's second law. As we have read in the previous NCERT notebooks book as well, the force is said to do work if when acting there is a displacement. There is a displacement of the point of application in the direction of force. If no displacement occurs after applying force, no work is done. The value of work is equal to force into displacement in the direction of force. Work is equal to force into displacement. Okay, S stands for displacement, F stands for force, W stands for work. Power is the rate of doing work by machine or anybody. Power is equal to work divided by time. The SI unit is joule per second. It is also called watt. Another power unit of power is horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watt. Energy is the capacity for doing work. Different form of energy are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy. So these are the different types of energies. It is a scalar quantity
and SI unit is joule. Mechanical energy. Mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy in an object that is used to do work. The sum of potential and kinetic energy is called mechanical energy. So mechanical energy is equal to kinetic plus potential energy in simple terms. Then we have this kinetic energy. Kinetic energy of an object is the energy that it possesses due to its motion. Okay, the potential energy is the energy in a body due to its position. It is clear that an object under a force is shifted from one position to another position. Then, during it done work, it's stored as a potential energy of an object. Then we have some of the apparatus and the transformation of the power. Let us start with the questions now. Simple mechanics helps a person in doing less work, the same amount of work with less force, the same amount of work slowly, the same amount of work much faster. Obviously एक सिंपल मशीन जो है हमें हेल्प करता है सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन अ लेसर विद द लेसर फोर्स एंड इन लेस टाइम. So B option is the correct option. So B option is the correct option. Okay, now I'll mark it with green so that B option is the correct option. Okay, then we have the second option. A man is standing on a sensitive balance. If he inhales deeply, the reading of the balance is equal to the reading of a balance increases if a person inhales deeply. 1 liter of air weighs about 1.225 gram. A maximal 4.8 liter breathe. Average vital capacity for males. Weight approximately 5.88 g. Inhaled air will add to the mass of the man, and thus his weight goes up slightly. If a man is standing on a sensitive balance, if he inhales deeply, then the reading of the balance will increase. Okay, so the answer of this particular question is increase, as we have read in the answers with the solution. Okay, then we have this. Which of the following is not a vector quantity? Displacement, velocity, force and volume. So the answer here is B, because इस जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है that the scalar quantity is defined as the quantity that has only got magnitude. So it means it has only got magnitude but no direction. Vector quantity comprises both of magnitude as well as direction. So in displacement we have magnitude और direction भी. Velocity में same magnitude भी direction भी. Force भी किस direction में जाता है, किस magnitude से apply हो रहा है, we have this. But in volume we do not have that. Displacement, velocity and force are some examples of vector quantity, while volume is a scalar quantity. Okay, volume is a scalar quantity जिसमें हमें सिर्फ जो है magnitude होता है available. Okay, so the answer here is volume. Now third question, which one of the following is a vector quantity? Again अब हमने अभी ठीक है. सो अब ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी टाइम, फर्स्ट वन इज टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस. अब उसमें हमें बोला था कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है. इसमें हमें बोला जा रहा है कि कौन इसमें है वेक्टर क्वांटिटी. सो द हियर ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, का कोई स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, बट नो डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी कंप्राइजेस ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, सो अब यहाँ पर देखना है कि हमें स्केलर क्वांटिटी कौन सी. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन होती है. सो फोर्स में तो हमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. प्रेशर में हमें
डायरेक्शन नहीं होती है. ओके, देन वी हैव वेलोसिटी. वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. देन वी हैव एक्सेलरेशन. मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रेशर. ओके, then we have this another question, which one of the following is a vector quantity? Again vector quantity पे question पूछा गया. It means that it is a very important topic. As you can see that every state PSC is asking questions on this particular topic, like BPSC, UPSC, ARO. Then we have this BPSC 65, BPSC IAS में पूछा गया है, right? So frequently asked question में आप ये पूछ सकते हैं, like देख सकते हैं कि ये एक trending question है and मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन दैट जो मतलब पूछा जाता है. सो आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड नॉट स्किप एट लीस्ट. देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगेन हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसमें बोथ हमारे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, दैट वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वी डू नॉट हैव डायरेक्शन. ओके, सो देन वी हैव here we go with the answer 1, momentum. Momentum is a vector quantity because it has direction as well as it has direction as well as magnitude. Then we have pressure. Pressure में we do not have both. इसमें हमें सिर्फ मिलता है what you call magnitude, डायरेक्शन नहीं होती है प्रेशर में. एनर्जी में भी हमें प्रेशर डायरेक्शन नहीं मिलती है. वर्क में भी हमें ये नहीं मिलता है what you call your direction. Okay, so momentum is a vector quantity. Here the answer goes with momentum. I think ये book काफ़ी अच्छी है. It will help you, understand like how are the questions building your conceptual clarity, because that is very important actually. Which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? Ratio of momentum and velocity of the body. Momentum is a vector quantity that इसका explanation दिया गया है. Momentum is a vector quantity that is the product of mass and velocity of the object or particle. So it means momentum is equal to mass into velocity, wherein mass is equal to momentum divided by velocity. So now the answer here is C. Mass, which physical quantity is represented by the ratio of the momentum and velocity of the body. So it means कि ये पूछ रहा है कि ये जो फॉर्मूला हमें दी गई है, this is the question that we have been asked, right? So इसको अगर आप लिखोगे भी एक बार पहले अपने एंड से, अगर आप इस क्वेश्चन को लिखोगे भी ना, देन यू विल गेट आपको फिर अच्छे से लर्न करके जानी है. ये जो फार्मूलाज हमें दी जाती हैं, इन फार्मूलाज को हमें अच्छे से लर्न करके जाना है, सो दैट वी कैन रिमेंबर इट ओवर देयर, राइट? ये क्वेश्चन BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है 2001 में. So obviously formulas are also important. Force is the product of mass and velocity, mass and acceleration, weight and velocity, weight and acceleration, mass and acceleration. Mass and acceleration का जो है product हमें force मिलता है. जब हम किसी particular mass पे फोर्स हम कब अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, मास पे, और उससे क्या बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगी, राइट? फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सॉरी. एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स जनरल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी. एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी? नो, कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन की बात हो रही है. एनर्जी कुड बी क्रिएटेड, एनर्जी क्रिएट की जा रही है, इट इज़ ये कंजर्वेशन की बात हो रही है. एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्ट्रॉयड. कुड नॉट बी क्रिएटेड, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था ना. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कंजर्वेशन की बात हो रही थी, जो हमें पता है कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ओके, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ विंड इज. एनर्जी, एक विंड की एनर्जी क्या रहती है? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ. सो इसका जो आंसर है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था, एक सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन.
सो ऑब्वियसली इसका जो एनर्जी होता है वो इसके मोशन की बेसिस पे होता है. द आंसर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी. इन विंड विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. विंड का जो फॉर्म रहता है उसमें कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. सो एज हमने ऊपर ही पढ़ा काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कवर करते हैं. ओके, यहाँ पर हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं रिविजन पर्पजेस के लिए. ऑल द मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी. इट इज अ एनर्जी possessed by an object due to its motion and movement. Wind energy is kinetic energy of air in motion. The kinetic energy of wind energy can be converted into mechanical energy or electrical energy. So as you can see, ये पहला क्वेश्चन आया है उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर, आई थिंक मे बी कोई एग्जाम होगा. एंड देन वी हैव दिस यूपीपीएससीएस में ये प्रीलिम. आई थिंक इससे हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आता है लाइक हाउ आर द क्वेश्चंस फ्रेम्ड, है ना. जैसे हमने टॉपिक्स पढ़ा था बट हमने इन इंस्टेंसेस पे ध्यान नहीं दिया. सो व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो वी गॉट टू नो. Then we have this another question, that is match list 1 with list 2. Choose the correct answer. Heat to electric, electric to sound, mass to heat, chemical to heat, and light. Now we have to match the following. Now heat to electric, right? Heat to electric का answer, एक second. हीट टू इलेक्ट्रिक का हम करते हैं सोलर एनर्जी में. क्यों? क्योंकि हमें सोलर एनर्जी में जब हम सोलर पैनल्स वगैरह लगवाते हैं सो तब वो हीट होती है, सन रेज पड़ती है उस पर, हीट डेवलप होती है और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. एंड ये सोलर सेल के थ्रू होता है. देन वी हैव इलेक्ट्रिक टू साउंड. यहाँ पर है कार बार्किंग, नो. न्यूक्लियर रिएक्टर, नो. देन वी हैव दिस लाउड स्पीकर. ओबियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में कैसे कन्वर्ट हो, लाउड स्पीकर करता है. देन वी हैव मास टू हीट. मास टू हीट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, कार बार्किंग तो नहीं है, केमिकल टू हीट एंड लाइट इज फ्यूल कंबशन. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉज ऑफ इनर्शिया, right? Then we have, as the train starts moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because of inertia of rest, inertia of motion, motion of inertia, conservation of mass. I think inertia of rest. Let's see what is the answer. Answer is A, inertia of rest, right? क्योंकि तब तक वो रेस्ट में थी एंड जब ऑल ऑफ अ सडन उस पर फोर्स अप्लाई किया गया तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइटली थोड़ा मोशन में आ गया. ओके, द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड. दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन बिगिंस टू मूव while the upper part of the body tends to maintain its position due to inertia of rest. Okay, static science is associated with, static science is associated with situation of rest. भैया important topic अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन. Then we have assertion and reason question. This has been asked in 2000 IES pre. Assertion: a man standing on a completely frictional surface can propel himself by whistling. If no external force acts on the system, its momentum cannot change. इसका आंसर है बी. बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज. क्यों डिफिकल्ट है आइस? बिकॉज आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन देन रोड. The roughness of road surface gives you much frictional force which enables us to move forward on road. It is okay. So basically as we have read, आई थिंक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था फ्रिक्शन टॉपिक को. सो यहाँ पर बताया गया है कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है आइस पे रखना. आइस पे चलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जस्ट बिकॉज कि उसमें हमें फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है, लेस फ्रिक्शन होता है, तो इस वजह से हमें आइस पे चलना डिफ़िकल्ट होता है. जबकि रोड पे हम इस वजह से चल पाते हैं बिकॉज वी हैव फ्रिक्शन ओवर दैट जो हमें जो है चलने में हेल्प करता है. आइस इज़ हार्डर देन रोड इज़ हार्ड
Ice does not offer any reaction when we push it with our foot. So the answer is D. Ice has less friction than road. Okay. Consider the following statement and conclusion which can be drawn from it. Choose the following. Choose the correct conclusion. In the starting in starting a loaded cart, one has to push harder than to keep moving. एक लोडर कार्ट में एक को पुश हार्ड करना है टू कीप मूविंग. ठीक है. द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन. So the answer is there is less friction on the cart once the cart starts moving. For every action there is an equivalent and opposite reaction. The law is stated by Newton. So basically, as you can see that this question is a little tough, right? Like we have to solve it. We have to solve this particular question. But we have to make it a point now कि अगर कोई भी question difficult आ रहा है, it is not difficult for you just. It is difficult for everybody. So we have to make it a point कि जो easy questions आ रहे हैं हम उनको पहले grasp कर लें अच्छे से, and then we take stress of other difficult questions, because difficult question हर एक के लिए difficult होंगे. So we need not to worry about that. Then we have cycles and cars used ball bearings because अब सीधे पर्पस पढ़ लेते हैं, बिकॉज आई हैव नॉट रेड दिस टॉपिक. द पर्पस ऑफ बॉल bearing is to reduce rotational friction and support radial and axial loads. Due to the ball bearing, the effective area of contact between the wheel and axis reduces and hence the frictional force is reduced. So it means कि frictional force को reduce करने के लिए हम what you call cycles में bearings, ball bearings वगैरह use करते हैं. So the answer is C. Why C? Then we have which is the correct equation for finding the acceleration. Acceleration का हम कैसे find करते हैं? So acceleration, as we know, V is equal to U plus AT, or AT is equal to V minus U. So now we will take A and T will get down. T divide में चला जाएगा. So this is how we find acceleration. So the part number A is correct. The working principle of a washing machine is centrifugation. The working principle of it is based on centrifugation is a technique which involves the application of centrifugal force to separate particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity, and medium or rotor speed. The separation of cream from milk by churning is due to centrifugal force again, because then we have this motion under gravity. Now we will be covering this topic tomorrow. I hope you guys understood all the questions very well. So I have left some questions. I think you can do it on your own. Let me know in the comment section below like how you felt this session was. Thank you so much. If you like my video, please give it a big fat thumbs up and subscribe to my YouTube channel for latest updates.